Good afternoon to all of you. Sorry for the delay. So the thing is that it is data science lab, and those who were present in our last class know that how that lab was conducted. So all of you kindly sit with your laptop and desktop with the software available, and those who have not, kindly sit with a pen and copy, because you need to show me your codes and the respective output. Okay, so we will just wait for 5 minutes, 2 or 3 or 5 minutes, so all that can join, and then we will start our class. Okay, so just wait for some time so that participants can join, and then we will start our practical class. And by that time, you people get ready with your laptop, desktop, with the software open. So, if possible, can I join after 15 minutes? Yes, you can, but I will start at 2:35. Okay, so you can join, no issue. So, actually, I wasn't knowing it is practical class. It is a practical class because I have mentioned in the link that data science practical class. I haven't seen that. I'll be there, sir, after 15 minutes, surely. Okay, so do join. Okay, okay. Sir. Okay. So good afternoon to all of you. Let's start our practical class as per the schedule. So the thing is, in our last class, we have discussed some topic, and we have performed some practical hands-on session in our Python. Just like them, so we have performed Armstrong number, we have checked the prime number, we have checked some Fibonacci series. So this type of particular programs have been done. Now we will going for some advance. Okay, means the advance of the previous classes program, not the advance of Python, the advance of previous classes program. Today our first program, today our first program is that in our last class we have make a code for the prime numbers, whether the number is prime or not. We have to check. This program have been done in our last class. Now going some advanced part of that, today we are going to check the interval, the prime number between some intervals. Suppose from 1 to 100, what are the prime numbers present? From 1 to 100, what are the prime numbers are present? We are going to check that. So you people need to write a code for Python. You people need to write a code for the Python
and I am going to check each and every one code for the last class as we have done. Okay, so what is the code logic for prime number was discussed in our previous classes. Now you people need to do the find the prime number between an interval. An interval maybe suppose 1 to 100, maybe suppose 200 to 300, maybe suppose 500 to 1000. So whatever be the interval will be given by the user. The interval will be given by the user, or also you people can means shift the interval, whatever the thing you can do, but it is better to take the interval from the user. Okay, so for that you people need to write a code. So this how to do this particular program, for that you people have done this in C and Java, I think. Now for the same thing you people need to write the code in Python. The logic will be same, but the some keywords and the statements are different. So all of you, first of all, let me know that how many of you have the laptop and desktop having the facility of Python software. So those who have raised your hand. Those who have the facility, kindly raise your hand. I didn't see any hands raised, so should I take that as a no one have the facility of laptop or desktop with Python software? You people, no one has this thing. Only Nishu have the have raise your hand, and rest of all those who have the facility with the laptop and desktop with the software of Python, any software, the Spider, whatever the software are, raise your hand quickly. And rest of all, if they don't, do sit a copy, sit with a copy. Okay. Okay. So let's begin the thing that those who have the laptop and the desktop facility with software of Python, do write the code in the software, and I am going to check your code as well as the output. And those for the left of the students, you people need to show me the code in your copy. You people need to show me the code in your copy. So quickly start writing the code for the program of Python. The program is that find the prime numbers between an interval. Find the prime numbers between an interval. The logic you people know. So start the code, write the code in your software, and let me show the out. Let me check the output and code for all of you. Okay, so you can lower your hand, Nishu and Manisha, and start to write the code. 5 minutes time, 5 minutes now. I will give 6 to 7 minutes, and then I am going to check the codes for all of you. 6 to 7 minute timing window for writing the code and run the output. And those who have not the laptop and desktop with software facility, write the code in your copy. Write the code in your copy. I am telling, I am going to check each of one's code. Everyone code I am going to check. So what is the question? Shikha, the question is, in our last class, we have discussed the prime number. Whether the number is prime or not, we are going to check. Now we are going to check the prime number for an interval. Suppose between 1 to 100, what are the prime numbers present? Okay, so this is the problem. Okay, sir.
Those who are finished after completing your code and output, raise your hand. Okay, so that I can know that you people have finished. Okay, so do that. Kindly raise your hand after you have finished your code and output. Those who have finished need to raise your hand. Otherwise, I am not going to know that you people have finished or not. Okay. So do raise your hand when you are finished. I am waiting to see the code and output. Okay, I can see one people have raised their hand. So Dolly have finished. So I will wait for some time, Dolly. So all that can finish and then we will check. Those who are writing in your copy also need to raise your hand because I am going to check the copy also. Whatever you have written in your copy, the code you have written in your copy, I am going to check also. So those who are writing in the copy also need to raise their hand after finishing their code.
तो व्हाट अबाउट द स्टेटस, कितने का हो चुका है? डॉली का हो चुका है, मैं देख रहा हूँ। बाकी लैपटॉप है आफरीन के पास, मनीषा, शिखा, तुम लोग का हो गया। और जिन लोग कॉपी में लिख रहे हैं उन लोग का हो गया क्या रिस्पॉन्स? अगर हो चुका है तो हैंड रेस कर दीजिए। ओके, वर्षा का हो गया, मैं देख रहा हूँ। डॉली और वर्षा का हो गया है, प्रीति सरकार हो गया है। बाकी Sir, यस पल्लवी। sir, what is the question? Actually, I have joined late. Okay, Pallavi. The question is, Pallavi, that in our last class we have discussed to check whether a number is prime or not. Today we are going to check Yes, sir. the interval. Between an interval, what are the prime numbers are present in an interval? So suppose 1 to 100, what are the prime numbers are present? This is the problem statement. Okay, so 4 people have already finished. Okay, so I will check the 4% later. First, I am going for who are new today and who is writing in copy. So first of all, I am starting with Sheetal Bharti. Sheetal Bharti. यस सर। तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया था उसका कोड आपने लिखा है कॉपी में? यस सर, लिख लिया। ओके, तो आप अपना स्क्रीन शेयर करके मुझे अपना कोड दिखाइए। सर हम कॉपी में बस उसका लिखे हैं। हाँ, मुझे कॉपी में, आपने जो कॉपी में लिखा है मुझे उसका कोड देखना है। ओके सर। शेयर स्क्रीन कीजिए, शेयर स्क्रीन करके अपना जो कोड लिखे आप वो दिखाइए। शीतल, अगर आपको मैं स्क्रीन शेयर करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक काम कीजिए, अपना जो क्वेश्चन जो आपने कोड लिखा है उसका फोटो लीजिए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। जो आपने लिखा है वो फोटो देखकर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं चेक कर लूंगा अभी। ठीक है ना? तो ओके सर। तो आप अभी कीजिए, तो तब तक मैं मूव करता हूँ लीना महातो। लीना, यस सर। तो आपने कोड लिखा है प्रोग्राम का? जी सर। सर कॉपी में लिखी हूँ मैं। हाँ लीना, आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर कॉपी में लिखी हूँ मैं। हाँ, तो कोड। कॉपी में जो लिखे आप शेयर स्क्रीन करके उसको दिखाइए। उसका फोटो खींचिए, पहले फोटो खींच के आप अपना जिन्होंने कॉपी में लिख रहे हैं उसका फोटो खींचिए, फिर शेयर स्क्रीन करके उस कंटेंट को आप शेयर कीजिए, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना? ओके ओके। ठीक है ना? तो आप लोग पहले जिन्होंने भी कॉपी में लिख रहे हो, जो जो भी स्टूडेंट्स कॉपी में लिख रहे हैं वो अपना पहले लिखने के बाद, कोड लिखने के बाद उसका फोटो लीजिए और फिर शेयर स्क्रीन करके उसको आप शेयर कीजिए उस कंटेंट को। ठीक है ना? तब तक मैं चलता हूँ जिन्होंने लैपटॉप पे किया है। तो आज पहले मैं देखना चाहूंगा वर्षा शर्मा। वर्षा शर्मा, आप अपना लैपटॉप में जो कोड एंड आउटपुट रन किए इस प्रोग्राम के लिए वो हमें थोड़ा दिखाइए।
ओके फाइन वर्षा, तो आपने लोअर एंड अपर आपने खुद से डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्रिंट किया है, ओके। फिर आपने लॉजिक लगाया है, ओके। लोअर अपर प्लस 1 if num greater than 1 and for I equal to range 2 comma num, okay fine, if num modulus I equals to 0, okay fine, okay fine. So I can see the output also here, okay ठीक है। अच्छा आप एक काम कीजिए वर्षा, लोअर पे आप डालिए 100 और अपर पे डालिए आप 300, पे देखते हैं क्या होता है। क्या सर लोअर पे 100, lower value will be 100 and upper value will be 300. 300? Run the code. Okay, fine. Okay, you can stop your share screen version. Okay, now I am going to check for Dolly. Dolly. Okay, Dolly. So here you are taking the input from the user. Fine. Dolly, the output screen. Okay. Value 250 to 350. Dolly, one thing I can see that the same number is repeating so much time. So I think some logical problem is there. Maybe some brackets or the loops have been iterating for so much time. तो वहां पे शायद कुछ गलती हुआ है, क्योंकि लूप एक ही नंबर को बहुत बार प्रिंट कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। num greater than 1 for num range lower upper plus 1. Okay, lower upper plus 1 is correct. Num greater than 1 I in range 2 comma num for if num modulus equals I. Okay. डॉली फॉर वाला लाइन पे तुमने वहां पे क्या सेमीकोलन डाला है या डबल क्या डाला है लास्ट में? तो यहाँ पे नहीं, हाँ वहां पे सेमीकोलन है, उसके नीचे हाँ फॉर पे तो कॉलन है। सेमीकोलन नहीं है ना, सेमीकोलन होने से नहीं होगा। नो सर। ओके, वहाँ पे सही है, मैं देख रहा हूँ वो भी सही है। इफ नाम ग्रेटर देन 1 ये भी ठीक है। तो ओके, फिर ये वाला क्यों हो रहा है? नाम इक्वल टू आई। चलिए मैं फिर से कोड को रन करो और 1 to 10 करके देखो तो क्या होता है। 1 to 10 करके देखो तो हाँ अभी तो सही आ रहा है। तो फिर वहां पे बार बार एग्जीक्यूट हो रहा था। फिर से एक बार अभी करो भी तो रिपीट हो रहा है सर। सर अभी भी रिपीट अभी हो भी रहा है। हाँ अभी भी रिपीट हो रहा है। 3 5 5 7 9 यस सर। 3 5 2 times 5 3 times 7 4 times, so it is just repeating. Okay, let's take the code again. कोड पे चलो, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। Equal to 10 input, okay, lower upper plus 1. लोअर अगर 1 है और अपर प्लस 1,
just so now it's correct. So else part there is some problem I think. वहाँ पे शायद हुआ। Yes, Okay, sir. fine. Yeah. Okay, Dolly. So okay, so you can stop your share screen. अभी चलते हैं हम लोग प्रीति कुमारी के पास। प्रीति कुमारी, Yes, sir. show me the screen and output. One second, sir. प्रीति तुम लैपटॉप पे कर रहे हो, सॉफ्टवेयर है ना तुम्हारे पास? Yes, sir. तो स्क्रीन को शेयर करो और अपना कोड Screen. दिखाओ। Sir. प्रीति तुम लैपटॉप से कर रहे हो या डेस्कटॉप से? प्रीति यू कैन स्टॉप योर शेयर स्क्रीन। Sir, screen share करना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपने प्रोग्राम किस पे किया है, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे? सर लैपटॉप में। और आप सेशन पे कनेक्ट किससे, फोन से? यस सर। तो दैट्स इज द प्रॉब्लम। सो डू वन थिंग, कोड का आप जो कोड लिखे उसका फोटो लीजिए और मुझे सेंड कीजिए, ठीक है ना? ओके सर। ओके ओके, so I Okay, sir. got the code also from Preeti Sarkar, Shubham Kumar Sharma, and that is I think Sheetal. Okay, so I have got 3 from you people also. Okay, so let's check for Shikha Kumari. Yes, sir. Okay, Shikha, show me the code. You're also the same thing is happening. One, it is repeating many times. Yes, sir. The output section I can see. So Dolly, can you help us here? What is the problem? Yes, sir. So Dolly, क्या problem हुआ था? C has to put a backspace before else. शिखा, एल्स के पहले एक बैकस्पेस डालिए। Okay, fine. I think that will work now. So let's check, run the code again. And now put the value 1 to 10. So what is upper value? 10. Shikha, 10. Okay, fine. So you have got the problem where that is before else there's the backslash, for and else the color matching is also important. So this is where this Python shell actually helping us, so we can identify the color problem. So for else color is also helping here. Okay, so Shikha, you can stop the screen. Okay, now we are moving for Afrin Khan. Afrin, have you done with the code? आफरीन, आपका कोड हो गया है? So I think Afrin has some network issue because many of you think I think many of you are facing network issue due to the bad weather and the rainfall. So no issue. Okay, for then I am going for Nishu. Nishu, Have you taken my name? Yes, yes, sir. so first Nishu, show your screen. Afrin, what are you saying? I'm saying, have you taken my name? Yes, I have taken your name twice. So let's check Nishu's first, then I am going to check yours also. Okay, Nishu, let's check yours and then I am going to check Afrin. Okay, A, B plus 1. Okay, fine. Okay. Okay, can you run the code, Nishu?
One to 10. Okay, fine. Now, Afrin, Nishu, you can stop the code. Afrin, you can show yours. Afrin. Okay. 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 Run the code, Afrin. Your value will be 20 to 30. Sure. Afrin, the output screen is not actually you are getting. Is it visible? Yes, the screen is visible. I can see the code, but not the output screen. So it's the output screen where I'm writing. Yes. Okay. I think Afrin has some network issue. Okay. So I have left for Pallavi. Pallavi, you can show your. Okay, fine. Lower and upper, LR and up, you have get it. Okay, fine. Okay. Okay, Pallavi, run the code. And your value will be for 100 to 150. Okay, okay, fine. Okay, Pallavi, you can stop the share screen. Okay, so I think I have checked all of you, all of your code and program I have got from Preeti Sarkar, Preeti Kumari, Lina, Sheetal, Shubham. Okay, Varsha have checked, Shikha checked, Pallavi, Manisha, or okay, I have checked all of the codes. Okay, so fine. So I can see that you people have done it successfully, and the logic you people have done it correct. So some of you have might some problem, but that has been fixed also and resolved. Okay, so next, moving to the next topic or next problem for today's. Okay, Dolly, Nishu, you can lower your hand. So for the next problem topic for today's is that in our last class we have discussed about the Armstrong number, and I hope you all remember what is the concept of Armstrong number. So today I am going to first ask again what is the concept of Armstrong number. What is the concept of Armstrong number? So this particular question, what is the concept of Armstrong number, will be given by who should give it? Who should give it? Sheetal Bharti. Sheetal, tell me that what is the concept of Armstrong number? शीतल, सॉरी सर हमको याद नहीं है. इसको याद नहीं है. Okay, fine, no issue. So Roshan Singh Munda, I can see you are connected, but your mic is not here. So are you present, Roshan Singh Munda? बस ज्वाइन होके यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप मुझको अगर अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट कोड आउटपुट ये सब नहीं शो करेंगे तो फिर मैं आपका अटेंडेंस यहाँ पे मार्क नहीं करूंगा. ठीक है ना. तो सिर्फ ज्वाइन होने से ये कुछ थियोरिटिकल सेशन नहीं हो रहा है कि आप ज्वाइन होकर बैठे रहेंगे, कोई फायदा नहीं है. प्रैक्टिकल सेशन में सबका कोर्स चेक करूंगा, आपको भी अपना कोर्स आउटपुट दिखाना होगा या आपको आंसर देना होगा. तो रोशन सिंह मुंडा इज नॉट हियर. Okay, so let's move on for who is new, who is not present in last class. I think Nishu. Nishu, do you आप last class में थे? No, sir. Okay, so tell me the concept of Armstrong number. सर नहीं थे लास्ट क्लास में. तो आप क्लास में नहीं थे, कोई इशू नहीं है. ये एमस्ट्रॉन्ग नंबर का लॉजिक आपको सी पे भी किया गया था. सी जब आप लोग पढ़े थे सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में, तब फोर्थ सेमेस्टर पे जावा जब ऐसा कुछ था तो वहां पे सी का इस एमस्ट्रॉन्ग नंबर का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था शायद. तो एमस्ट्रॉन्ग नंबर का कॉन्सेप्ट आपको याद है?
सर मीन्स आर्मस्ट्रांग नंबर अगर किसी भी नंबर का आर्मस्ट्रांग नंबर निकालते हैं ना, अगर वो दो डिजिट का रहा ना, तो दो डिजिट का दो डिजिट का नंबर है तो पहले डिजिट का स्क्वायर करेंगे प्लस सेकंड डिजिट का स्क्वायर, और दोनों को ऐड करेंगे, वो इक्वल आना चाहिए ओरिजिनल नंबर के। और अगर वो 3 डिजिट है तो हर एक का क्यूब करके ऐड करेंगे, अब वो आना चाहिए ओरिजिनल नंबर के। अगर 4 है तो 4th पावर जाएगा। ओके फाइन, यस, बस मैं यही जानना था सर। ठीक है ना, तो अभी आप लोग को क्या करना है, एमस्ट्रॉन्ग नंबर का लॉजिक आप लोग को पता है, लास्ट क्लास में भी जो प्रेजेंट थे उन लोग ने देखा था कि एमस्ट्रॉन्ग नंबर हम लोग कैसे करेंगे। अच्छा, उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट कि लिंक कभी भी कटने वाला है, तो अभी आप लोग, मैं इस सेशन को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग फिर से उस लिंक पे ज्वाइन कीजिए, तो हम लोग डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं लिंक को अभी एंड कर रहा हूँ, आप लोग फिर से ज्वाइन कीजिए उस लिंक, जो लिंक है उस पे अभी फिर से ज्वाइन कीजिए, हम लोग फिर ये वाला प्रोग्राम पे बात करेंगे, ठीक है ना।